जिसका भी डायरेक्ट है, एंड देन अगर वो लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, he will go to the next team. So if the direct is for team 3, he'll go to team 4 and he'll skip over the teams which have pounced. ठीक है? हाँ, अगर पाउंस किया हो तो डायरेक्ट नहीं होगा. Got it everyone? और Any questions? ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. ठीक है, go on. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ओके, वी आर स्टार्टिंग. क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट टू टीम नंबर 1. तो back when Indira Gandhi, question read karo, during an ongoing joint operation with Soviets, X, who was squadron leader of Indian Air Force, was asked a question by the then Prime Minister Indira Gandhi during a live conference about India. X replied to this question with a phrase which is well known to each and every Indian. So ID X and the phrase. तो X इंदिरा गांधी के जमाने में एक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे, and he was involved in a joint operation with Soviets, which means Russia. So he was asked a question during a live conference, news conference by Indira Gandhi. She asked him something about India, and he replied with a phrase which all of you do know. और कल जो दिन है उसके रेस्पेक्ट में तुमको बहुत बार सुनने भी मिलेगा. तो just tell me the name of this squadron leader who you probably know and this phrase. Pounds will close in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds is done. Scorer, please note the scores. Team 5 gets plus 20. Yes. Team 7 gets plus 20. Or team 2 gets plus 20. Direct to team number 1. Sir, we guess that it is Rakesh Sharma who said the code, and the code was सारे जहां से अच्छा. Yes, सारे जहां से अच्छा. Rakesh Sharma said when Indira Gandhi asked him कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है. तो Yes, sir. This was question number 1. Scorer, team 1 को plus 20. Are we good to go? Yes, sir. Question number 2. Yes, yes. This is direct to team 2, so team 2 doesn't need to pounce this one. All the fish of this species are born with male and female, both male and female parts. In a colony that is centered around one sea anemone, the largest fish is the female and the second largest will be the male, while all others will be both. If female were to die, then the male will turn into female and smaller ones will become male. What is with this unique ability to change their genders, the colony ensures the safety of the community. Which fish is this whose actual life story might have changed the way people perceive a popular children's movie? Children's movie से जाओ और fish से जाओ. Fish का नाम चाहिए मेरे को. I don't need a movie or anything. Pounds closing in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. I will not accept any more pounces. Team 5 gets a plus 20. Team 6 gets a plus 20. Team 7 gets a plus 20. And team 3 gets a minus 10. Team 2, it's your turn for the direct. The direct is open to you. Sir, can it be goldfish? No. So team 3 pounds लिया था. Yes, team 4 पे जाएगा. हाँ ठीक है. Team 4 direct to you. Finding Nemo. I need the fish, not the movie. I said that during the pounds.
No, I just one pass. Starfish. Who said starfish? Team 4. No, okay, pass to team 5 लिया था तो team 6 पे जाएगा. नहीं, team 6 भी लिया था. 7. सर टीम 1. टीम 1 पे जाएगा. ठीक है, टीम 1 ले लिया था. ठीक है, टीम 1. Guesses? Sir, we guess clownfish. Okay, you're right. So clownfish it is, and team 1 gets plus 10 on bounce. Team 1 gets plus 10 on bounce. Scorer? Yes, sir. Scores noted. We can move ahead. Okay, thanks, Rahul. So question number 3, direct to team number 3. Life on Earth is a landmark nature series on BBC. It was started in 1979. The presenter travels the globe in order to trace the story of evolution of life on the planet. In his 80 years in front of camera, he is the only person to win BAFTA awards for work in black and white, color, SD, and 3D. Who is this iconic figure in nature conservation who has multiple species named after him? You've probably seen a lot of screenshots of this guy online, some memes too. He's been knighted also. That's all the hints I'll give you. Pounds closes in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. Team 5. Team 5 pounced, and I'll be giving them plus 20. Team 4, you were late. You Sir, can attempt this. actually- You can attempt this on the bounce if it comes to you. Okay, But sir. you were late. So team 3. Can you unmute yourself? Sir, is it David Attenborough? It is David Attenborough, and team 3 gets a plus 20. So Rahul, note team 5 gets a plus 20 and team 3 gets a plus 20. Rahul? Okay, sir. Yes, sir. Okay. We can move ahead. Okay, next. Question number 4 to team 4. Common myth is that there's a room at CERN where the original web servers were located. However, it's been said that when this person Thomas says that when he visited CERN himself, he saw that there was actually no room number and the room number X, and the CERN office numbering system doesn't work like that. So there is no room named room X in CERN, and it's certainly not the place where web began. In fact, there's even a notice in CERN that the whole room X thing is just a myth. Okay, so there's a room X which you cannot find in CERN, and it is there's a common myth about it. So what is origin story? So what is this room X? I just need X. Focus on a lot of things. See, focus on the if nothing else, then just focus on the fact that this room cannot be found in CERN. Okay, you'll get the X. So pounds closing in 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. 3 teams have pounced. Team 1 gets plus 20. Team 7 gets plus 20. And team 5 gets team 5, did you pounce? Or Yes, did sir. you just Yes, sir. Yes, sir, we did. Yes, sir, we did. so that is your answer. Can you clarify me on text?
T5. Okay, so team 5 gets a -10. Rahul, have you noted the scores? Yes, sir. Okay, so question number 4, direct to team 4, and your answer? 404 error, that 404 error. It Fine. is 404. There's a urban legend that room number 404 at CERN was where internet was started, but that's not the case, and there is no room 404 at CERN. That is exactly why 404 is the error code for something that is not found. Next question. Okay, so team 5. Team direct to team 5. So you can see this gun shaped object here. It's actually a precursor to modern movie cameras. You held it like, if you were making a movie, you will hold it like a normal rifle and pull the trigger. So because of this camera, this ancient camera, there's a term in our vocabulary related to videography that all of us normally use when you are making a movie or anything, recording a video or anything. So what is this phrase / term? Okay. Focus on the question. It's given. If you read the question carefully, you will understand. I am closing the pounds in 7 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. 4 teams have pounced. Team 6 gets a +20. Team 7 gets a +20. Team 2 gets a negative. Team 2 gets -10. And team 1 made a typo, but I'll allow it. So team 1 gets a +20. Question number 5. Team 5, it's your turn. Sir, I think film shot. Aim and shoot. Who said that? Team 5, Sir. Priyanshu. Yes, sir. Okay, so I'm just warning you guys. Only one of you need to unmute yourself and say the answer. Okay. Okay, sir. Keep that in mind for the next time. Just discuss among yourself and decide what is the answer you're gonna go with. So team 5, I am giving you a +20 because the answer is plug charger in my laptop, so just I can go. Yeah, you can take we can take a minute break. Just tell us when you're ready. So the answer is shooting. The thing is, people used to pull the trigger, so the term shooting from gunfire transitioned into filmmaking. Raghav, are you ready? Yes, sir. Okay, so team number 6, the next question goes to team 6. Wombat is a small marsupial found in Australia, which has an unusual way to mark their territory. When they leave to forage for food, they leave distinctively shaped poop outside to leave other wombats know about their burrow. But since most of the area is hilly, the distinctive shape, which looks very unnatural, ensures it does not roll off. What is the shape of their poop? Okay. It's given in the question. It does not roll off, so focus on that. It's something that would not roll off, and it's a very peculiar shape. Pounds closes in 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. A lot of people ये कौन है? A lot of people here know a great deal about poops. I am disgusted, frankly. And team number 2, I'll not accept your pounds because you were late. Pounds was closed. So team 3 gets a negative. Team 4 gets +20.
Team 1 gets plus 20. Team 7 gets plus 20. And Team 5 gets a plus 20. So apart from Team 2, who I ignored because they were late, Team 6, it's your turn. Team 2, I'll get the bounce on you if the Team 6 doesn't answer. Cube shaped. Yeah, it is cube shaped. If you gave a square, I would have given you a negative. It is cube shaped. So scorer, are we good to go? Team 6 gets a plus 20. So like team 2 is getting 0 and team 3 minus 10, except that everyone gets plus 20, right? Yeah, that's it. Okay, sir, we are good to go. Okay, thanks, Rahul. Question number 7. So team number 7, it's your direct. So in mid 1940s, Kodak received a lot of complaints that the Kodak sells films. So they were getting complaints that their films had dark spots in them and their photographs were getting ruined. So Kodak investigated the matter, and the cause of their problems were tests that were being conducted by some agency, and these tests were releasing new kinds of pollutant into the environment which were ruining their films. So Kodak tried contacting the agency, but agency didn't respond, so they threatened them with a lawsuit. When they threatened them with a lawsuit, the agency quickly revealed all necessary information to Kodak regarding when and where they will be conducting their tests. So Kodak could take proper steps to safeguard their products. The general public had no idea about these tests till 1945. What was the agency doing that was ruining Kodak's films? Read it. I'm giving you 12 seconds for this, so read it carefully. 1945, general public learned about this in 1945, not before, about these tests. So just think about that for a moment. And pounds closes in 12, 11. सर कुछ हिंट है इसमें. Just focus on 1945 and think about the geopolitical situation and major events that happened. Okay, so pounds closes in 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. Only 2 teams have pounced on this one. Team 6, I'll give you plus 20, and team 1 gets a plus 20. So both teams get plus 20. Team 1 and team 6. Team 7, it's up to you. It's your direct. Team 7. No idea, sir. Pass. Okay, so pass. pounds goes to team 2. Direct goes to team 2. Sir, can it be atomic testing? Yeah, I'll give it to you. It is atomic testings. 1945 was the hint because of the nuclear. After Hiroshima and Nagasaki, world came to know about those nuclear bombs. So nuclear testing was the right answer, and 2 teams gave me answer. So everybody has a direct. Everybody has had a direct now, and as we told you earlier, 2 teams थे जिन्होंने बोला कि उन्होंने participate नहीं किया है. तो या तो उधर गुडविल हंटिंग टाइप सिचुएशन चल रहा, नहीं तो फाइट क्लब. दोनों ही की सिचुएशन में हम लोग को मतलब नहीं है. We prepared 8 questions for this round. So this last question is a pounce only. No directs on this one, no bounces on this one. This extra question is pounce only for you guys. So the founders were working on a consulting project for the CIA. The code name for the project was X. The CIA saw this as the system to give answers to all questions or some such. The project was designed to use the newly written SQL database language from IBM. The project was eventually terminated, but they decided to finish what they started, and to bring it to the world, they kept the name X and created RDBMS engine. Later, they changed the name of the company, Relational Technology Inc., to the name of the product. Tell me X. So it is
X is a very big software company, and RDBMS should be your hint. It makes a software that is related to DBMS. Give me the modern name of the company. Pounds closes in 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. 3 teams have pounced. Team 5 gets plus 20. Team 7 gets minus 10. And team team 3 said ingress, which won't be right, so team 3 also gets a negative answer. I asked for the modern name of the company, so answer, can we move on to the answer? The answer is Oracle. So okay, Rahul, note kar liye scores. Rahul, team 7 and 3 get minus 10 and team Yes, 5 sir. gets plus 20. Yes, yes, sir. ठीक है, तो राउंड के एंड पे एक बार स्कोर दिखा सकता तो दिखा दो. हाँ, एक सेकंड. किसी को पानी नहीं पीना तो जल्दी पी लो. स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ, विजिबल है. So we are having the scores like this. Team 1 at 110, Team 2 at 30, Team 3 at minus 10, Team 4 at 40, Team 5 110, Team 6 80, and Team 7 at 90 points. किसी को अपना स्कोर्स पे डाउट है तो अभी बोल दो. राउंड 1 का स्कोर्स पे अगर किसी को डाउट है तो अभी बोल दो. Also, I encourage you to maintain your own scores and your competitors' scores if you want to. That is a good practice. If there are no doubts, so we can move ahead to the next round. Okay sir, हम शेयर करना बंद कर दें? हाँ, शेयर करना बंद कर दो. Okay sir. Okay, so the answer was Oracle, and this is round 2. We have 5 questions in round 2. This okay, so you don't need to pounce after every question in round 2. Just just write your text and add all the answers to it. Text me all 5 answers at once after I have shown you the all 5 questions. I'll go through 5 questions. I'll give you hints wherever necessary. Text me all 5 answers at once. There is no negative marking for any question, but that does not mean that you will send me 3 different answers for the same question. Okay, send me 1 answer for each question. Send me all answers at once after 5 questions are done. I'll give you ample time, and partial marking at my discretion. And okay, so you get the idea. Plus 20, 0, and no negative marking. Just don't send me answers one by one, and don't send me multiple answers for the same question, because there's no negative. So plus 20 is for single question. Yeah, plus 20 for a single question. Send me all questions at once, at the end, when I'm through with all the questions. Can we proceed? Okay. So this service was created by Eric Yuan, a teenager who hated 10-hour train journeys to his university on Monday mornings. He wanted to create a platform where he could visit his girlfriend minus the travel. His daydreaming then led to what is now a billion-dollar app that every other student, teacher, amateur quizzer uses almost on a daily basis. What app is this? No hints on this one, because seriously, if you see the answer, you'll understand why there's no hints on this one.
we can move to the next question, and I can see someone typing. Just don't accidentally hit send. Okay. Text me all 5 questions at the end at once. Okay. So Stranger Things may dive into the world of aliens, superpowers, and upside down, but the series is grounded in reality, and people give it a lot of credit for the original depiction of the life in 1980s. One of the things that the show hasn't been praised for is the periodic table visible in its episode. What is wrong with this periodic table? Can we have the visual? Okay, see. So Mr. Clark के पीछे तुमको एक periodic table दिख रहा है. वो periodic table में कुछ गलती है. I need the generic answer कि क्या गलती होगा. Just send. I don't need extremely specific something. Just text me what is wrong with this periodic table. Okay. Keep in mind this show. Can we go back to the text? That this show has been praised for the depiction of life in 80s, but the periodic table has been pointed out that it's wrong. Question number 11. A herpetologist discovered a frog by accident in 2008 in Indonesia, which has the ability to enlarge and inflate its nose when the male frog is calling out. This led to it being called by a particular name that references a character from popular fairy tale who has similar issues, but under different circumstances. In 2019, it was finally given the same name as its species name as well. What is its name? Okay, so its name comes from a fairy tale character. This frog has the ability to enlarge and inflate its nose when a male frog is calling out. No hints on this one. Just give me the name of this frog. Its name comes from the fairy tale character. Question number 12. As a part of their Grace FO mission, NASA launched a pair of satellites named Grace 1 and Grace 2. The purpose of the mission was to study the Earth's shifting water masses and their effects on gravity. With the help of these two satellites chasing each other in space around the Earth. So chasing each other in space, chasing each other is a big hint. What are these satellites aptly nicknamed? I need the nickname of these satellites. Chasing each other is a big hint. All of us, and especially when we were kids, we were really familiar with this nickname. Next, question number 13. The unique characteristics of these animals is thanks to presence of low molecular weight thiol compounds and few acetate thioesters, that they can be detected by human nose at minuscule concentrations at 10 parts per billion. So their smell can be detected even if the concentration is very low. And this animal has a characteristic color pattern as well due to its marvelous nature. It has been vilified in many cartoons and movies. Like all the cartoons and movies treat these animals really badly. Okay, so just give me the name of this animal. Smell is a big hint that we can smell them even if the concentration is really low in atmosphere. It is a mammal, I'll say that. Question, is this the last one? I think this is the last one. 9, 10, 11, 12, 13. Okay, next slide. Next slide. So just go over the, can we rewind it? Just go over it quickly. Vaibhav, Sir, you may should you please mute rewind the yourself. question? Yeah, I am rewinding it. Vaibhav, please mute yourself. Sir, I was asking for that rewind only. That's why I muted. Yeah. Okay, you can mute yourself. Sutej, can we rewind? Okay, so question number 3. Okay, see, वही order में चलो बस 9 से 9, created by Eric Yuan, a multi-billion-dollar app that every student, teacher, amateur quizzer uses on daily basis. A platform where he could visit his girlfriend minus the travel. Question number 10. Can we have the visual? What is wrong with this periodic table? Question number 11. It's a frog which can inflate its nose.
named after a fairy tale character. Question number 12. Two satellites, just give me their nickname, nicknamed after some beings that keep chasing after each other. Question number 13. An animal whose smell can be detected by human nose even if the concentration is really low in atmosphere, has a characteristic color pattern. It's a mammal. Okay. So send me the answers. It's 2033 now. I'll accept answers till 2034. Sir, please can you show the 11th question once, sir? Go back to the 11th question. Okay, 2035 क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गया 2034. 2035 तक ओपन है. जल्दी जल्दी मेरे को टेक्स्ट करो सब लोग. और एक बार अगर कोई मेरे को टेक्स्ट कर दिया तो दूसरा आंसर के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं भेजेगा. ठीक है. मेरा क्लॉक में अभी 2034 हो रहा है. सबका क्लॉक में आई होप सेम ही टाइम हो रहा होगा, मतलब 8:34. ओके, सो 2035 होने वाला है. अभी क्लोजिंग पाउंड्स सब लोग ले ही लिया तो चलो छोड़ देते हैं. सब लोग ले ही लिया टाइम इंटरवल में. ओके, तो हम आंसर दिखा दे पहले या स्कोर बोल के फिर आंसर दिखाएं? स्कोर बोल देते हैं पहले. स्कोर पहले राहुल को आराम होगा. स्कोर राहुल को आराम होगा. +20 था ना. सो टीम नंबर, ये कौन सा टीम है? टीम 4 गेट्स +60. Rahul, keep noting. Team 5 Yes. gets Team 5 gets +60. Team, ये कौन सा टीम है? Team 2. Team 2 gets +80. Team 7 gets 1, 2, 3, 60. Team 7 gets 60. Team 3 gets 1, 2, 3. Team 3 also gets 60. Team 1 gets 1, 2, 3, 4. Team 1 gets 80. और लास्ट टीम 1, 2, 3. ओके, सो टीम 6 को दे रहे हैं हम 80. टीम 6 को 80. Okay, sir. ठीक है, तो सारा टीम्स का स्कोर नोट हो गया. रुको एक सेकंड. ये Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ. टीम 4, ये तुम लोग आंसर नंबर 2 में क्या लिखा है? जो भी लिखा है चलो इसको दे रहे हैं. ये लोग का भी यही होगा. मतलब स्पिरिट है बंदा में, सही चीज लिखा है. 40, ये लोग का 80 कर दो. टीम 4 का 80 कर दो. एक्चुअली में Okay. टीम 4 का 80 कर दो. मेरे को कुछ और लग रहा था ये लोग लिखा है. ठीक है, तो सबका स्कोर्स नोट कर लिया सब लोग. आंसर्स दिखाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9. अनम्यूट करके किसी को आंसर बोलना है, गेस करना है तो करो. Zoom. Yeah, you're right. Zoom it is. क्वेश्चन नंबर 10. पीरियोडिक टेबल के साथ क्या गलत है? सारा एलिमेंट्स है जो भी उस समय डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ था. सारा एलिमेंट्स नहीं, कोई लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स वगैरह कुछ कोई लिखा था, पता नहीं, याद नहीं है. लेकिन ये जो व्हाइट में एलिमेंट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता था 80s में. इन्वेंट नहीं हुआ था. नंबर 11. गेसेस. एक्चुअली ये पिनोकियो होगा. पिनोकियो होगा, आई थिंक सो.
Yeah, it is Pinocchio frog. 12. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Yeah, it is Tom and Jerry. Some team wrote cat and mouse. They were really close. And question number 13. Skunk. Yeah, it is skunk. So I don't think you need to see the scores for this one, but score कर दिया ना सबको? यस सर, सबका हो गया. हेलो. हाँ यस सर, हो गया सबका स्कोर. ठीक है मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा है. राउंड 3 इट इज एंटी क्लॉकवाइज बाउंस. तो सेम रूल चलेगा. क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 टीम 8 को जाएगा. टीम 8 नहीं है तो टीम 7 को जाएगा क्वेश्चन नंबर 1. और डायरेक्ट उसके बाद बाउंस. लास्ट टाइम हो रहा था कि 1 के बाद 2 3 4 5 जा रहा था बाउंस. इस बार टीम 7 के बाद टीम 6 5 4 3 2 1 जाएगा. समझ में आ गया सबको? स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 बाउंस टू, ये मेरे को लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज टीम 7 का है डायरेक्ट. Peabody's Improbable History was a recurring segment from 1960s cartoon series Rocky and Bullwinkle show. In this segment, Mr. Peabody and Sherman travel back in time using a time machine called X, something on the internet which is meant to archive and prevent loss of knowledge due to deletion or regular updating of sites, borrows its name from this time machine. Name this machine. So there is something on the internet which is meant to archive and prevent loss of knowledge due to deletion of or regular updating of sites. Unmute yourself. So what is this? Send me the answers. Pounds. पुराना pounds का रूल से वाला. तो pounds closing in 5 4 3 2 1. Pounds closed. जो भी टाइप कर रहा है रोक दो. पाउंड्स क्लोज हो गया है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. 2 टीम पाउंड्स नहीं लिया है. नोट द स्कोर्स. टीम 4 gets plus 20. टीम 1 gets plus 20. टीम 5 gets plus 20. टीम 6 को हम ये कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि तुम जो लिखा है वो मेरे को लग रहा है टाइपो है, लेकिन फिर साथ में हम बोल भी नहीं पा रहे हैं. हम 10 देते हैं. ठीक है, तुमको 10 दे रहे हैं टीम 6 को हम. ठीक है, और टीम 3 को प्लस 20. ठीक है, तुमको अगर इंप्रूव करना है कर दो, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है टाइपो है, लेकिन बहुत घटिया टाइपो है. सर टीम 4. टीम 4 2 टीम पाउंड्स नहीं लिया है. 2 टीम पाउंड्स नहीं लिया है. टीम 2 और टीम 7 पाउंड्स नहीं लिया जिसका डायरेक्ट है, और बाकी सबको प्लस 20 हुआ है. ओके. ठीक है, तो वी कैन मूव. सर टीम 6 को प्लस 10 ना, और बाकी 4 को प्लस 20. सर मैंने इम्प्रूव किया है मैंने. हाँ ठीक है, टीम 6 को भी प्लस 20 दे दो. ठीक कर दिया. बहुत अजीब सा टाइप होता. 3-4 लेटर मिसिंग था. इतना शॉर्ट हैंड में मत भेजा करो. ठीक है, टीम 7 डायरेक्ट है तुम लोग का. अटेम्प्ट लेना है तुम लोग. सर वे बैक मशीन. हाँ, वे बैक मशीन इट इज प्लस 20 टू टीम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टीम 7 को प्लस 20 दे दिया राहुल. So this was created on old bulletin boards where elite status on a bulletin board service allowed a user access to many things and special chat room, etc. It has become very integral part of modern internet terminology. It is speculated that it was developed to defeat text filters, and because there were message boards that forbade the discussion of specific things, so
This was developed to counter that. Users would substitute words with digits or glyphs, etc., etc. Give me X. It is the name X for this practice, where people would replace letters with digits or glyphs and write in code. We also do this with passwords. So pounds closing in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. So anybody who's typing, don't text me the answer. So ये कौन सा team है? Team 6 का है ये. Team 6, unmute yourself. So is it sensor? Yeah, it's not sensor. ओके नहीं, एक काम करो, हम बाउंस पे कोई बाउंस नहीं लिया है इस पे, इसलिए तुमको हिंट दे रहे हैं. एलीट वर्ड इज अ हिंट. द एलीट स्टेटस वर्ड एलीट इज अ हिंट. ओके, सो टेक योर चांस. टीम 6. टीम 6, तुमको अटेम्प्ट नहीं देना टीम 6, तो हम पास कर देंगे 5 पे. Okay, so passing to 5. Sir, team 6. क्या? Sir, emojis. नहीं, passing to 5 गलत है. Team 6. Don't worry, कोई नेगेटिव नहीं है डायरेक्ट पे. Team 5. I'll reiterate, the elite word is a hint. Team 5. टीम 5 से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो I'll go with ठीक है, टीम 5 मनीष. So I think it is asterisk. What did you say? Asterisk. Yeah, no, it's not asterisk. Team number 4. Sir, I guess it's lead. Yeah, it is lead. It is coming from the word elite. It is lead. So lead speak. Team 4 gets plus 10. Team 4 gets plus 10. तुम लोग ये टॉरेंट साइट देखा होगा 1337X, ठीक है? और ये इस टाइप से तुम लोग नेम में नंबर वगैरह इंटरचेंज करता होगा, तो उसको लीड बोलते हैं या लीड स्पीक बोलते हैं, ठीक है? 1337X is code for lead. So this is lead speak, and team 4 is the only one to score. Team 4 gets a plus 10. Moving on to the next one. So इसके लिए hints नहीं मिलेगा, ठीक है? In their bid to teach us the Greek alphabet, WHO decided that they will name COVID variants after Greek letters. तो पहला 12 लेटर को without issue they used, but letter number 13 and 14 was skipped, ठीक है? 13th Greek letter is nu, which was skipped because people would name it new variant, so it was skipped. But 14 was skipped due to political reasons. The 15th one is Omicron, but the 14th one was skipped due to political reasons. So why was 14 skipped? Political reasons associated with COVID. Pounds closes in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. 5 teams have pounced, and don't text me anything else. Okay. Team 7 gets, देखो इसमें बहुत एग्जैक्ट चाहिए, तो टीम 7 को हम नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है सर? क्योंकि सब लोग टाइम कम था सर. हाँ, तुम लंबा वाला चीज भेज दिया, लेकिन छोटा सर वो पाउंस, सर पहले पाउंस वाला मैसेज भेज दिया सर. टीम 3 को हम दे दे रहे प्लस 20. टीम 3 गेट्स प्लस 20. टीम 1 गेट्स प्लस 20. टीम 2 गेट्स प्लस 20. और ये कौन है? टीम 6 गेट्स प्लस 20. ठीक है, तो ये लोग कर लिया. ये क्वेश्चन नंबर 16 है, तो किसका होगा? ये डायरेक्ट 5 का है सर. 5 का डायरेक्ट है ना? ठीक है, तो 5 सबका स्कोर दे दिया ना, जो लोग का बोल दिया? हाँ, उन लोग को दे दिया. एक को नेगेटिव गया, वो बोला किया सर. इंप्रूव कर दे सर उसको. हाँ, 7 को नेगेटिव.
नहीं, सब लोग एक बार में सीधा सीधा आंसर भेजते हैं, बहुत छोटा आंसर था। ठीक है सर वो नाम तो है ना सर, वो भी लास्ट ठीक वाला। है, तो अब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। टीम नंबर जिसका भी डायरेक्ट है अनम्यूट करो खुद को। Yes, sir. हाँ Sir, because it resembles the Chinese president named Xi Jinping, so it, to avoid हाँ this. ठीक है, नेक्स्ट चलो। आंसर शी होगा, जो शी जिनपिंग दिया है उसका भी चलेगा, लेकिन जो मेरे को जिनपिंग बस भेज दिया उसको हम नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट शी टाइप करना ज्यादा आसान था। तुम CHI शी भी लिखता तो हम दे देते। ठीक है, तो स्कोर कर दिया सबको राहुल? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो ऑन टू द नेक्स्ट, डायरेक्ट टू 4, राइट? 4 का डायरेक्ट है ना? हाँ 4 का डायरेक्ट। ओके, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए हम हिंट्स देंगे। सो ब्लू इज मेनली यूज फॉर जनरल, दिस इज कलर कोडिंग ऑफ समथिंग। ब्लू मीन्स कि ये चीज जनरल पर्पस है, ऑलराउंडर्स, एवरेज यूजर कैन यूज इट। Green is basically the same as blue, but it lacks performance and is more eco-friendly and is quite cheap. Black is for pure performance and is the most expensive version. Red is optimized for NAS systems. Purple is for surveillance, for people who are using their devices 24/7. And gold is the most premium of all and is made for data center specific applications. So this is a component of some device, and this is the color coding of some component of a device. Okay, so I need the name of the component. I don't even need the name of the company that produces these components. There are many companies that makes it, but this is the color coding of one specific company. Just give me the name of the component. Sir, so we have to name the product actually. Yeah, you have to name the product. You don't need to tell Okay. me the company, Okay, because okay. I know that would be a bit too much for you. So pounds closes in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. Again, तो ये टीम 5, टीम 5 तुम एक्सपैंड करो इसको, ठीक है? तुमको चांस दे रहे हैं। टीम 3 करेक्ट है, +20 टीम 3। टीम 2 का नेगेटिव है, टीम 1 का +20 है। हाँ, टीम 5 का, चलो टीम 5 का +20 है, और ये क्या था, टीम 6 का भी +20 है। ये टीम 4 का था डायरेक्ट, टीम 4। एक टीम का नेगेटिव हुआ है, राहुल नोट किया ना? एक टीम का नेगेटिव हुआ है, यस सर। टीम 2 का, और टीम 4 और टीम 7 अटेम्प्ट नहीं लिया था। बाकी सबको +20 कर दो। एक का नेगेटिव है और टीम 4 का डायरेक्ट था, तो टीम 4। Sir, these all are color schemes of the hard disk. दोबारा बोलो, तुम्हारा वॉइस नहीं आया मेरे को। Hard disk का color. हाँ ठीक है, Color scheme of hard drives. कलर स्कीम ऑफ हार्ड ड्राइव्स इज करेक्ट। सो WD का हार्ड डिस्क का कलर है ये, ठीक है? टीम 4 गेट्स अ +20। हम एक्सपैंड करने बोले थे क्योंकि बंदा मेरे को ड्राइव्स भेज दिया था, तो रजिस्टर का कलर कोडिंग जो भेजा है उसका गलत होगा, ठीक है? ऑल्दो गुड गेस, लेकिन तुम लोग को फिजिक्स में पढ़ाया है कि कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है, तो बैड गेस। तो ये वाला होगा टीम 3 का डायरेक्ट। Springle pump is a vacuum pump that uses drops of mercury falling through small bore capillary tube to trap air from system to be evacuated. It was invented by Hanover-born scientist Hermann Sprengel in 1865. Pump created the highest vacuum achievable at the time. Without this lesser-known component, one of the greatest inventions to revolutionize our daily lives would not have been possible. What is this invention? Think 1865, think a revolutionary invention, and think that it needs a very high vacuum, which means it needs an airless environment to function. Okay, 1865, a revolutionary invention that all of us use. Not the same kind of thing, it has undergone through many changes, but all of us definitely use it in our homes. Pounds closes in 5,
4, 3, 2, 1. Pounds closed. 3 teams have pounced. अच्छा भाई मेरे को एक बात बताओ टीम 5, जब क्वेश्चन में स्प्रेंगल पंप दिया है तो तुम लोग स्प्रेंगल पंप ही मेरे को रिप्लाई आंसर क्यों किया? बाकी दोनों का स्कोर बता रहे हैं। टीम 4 गेट्स अ नेगेटिव और टीम 6 गेट्स अ नेगेटिव, ठीक है? और टीम 5 को भी हम नेगेटिव दे रहे हैं बिकॉज दे टेक्स्टेड मी स्प्रेंगल पंप. They took an attempt even though they just texted me the question again. और सबका एग्जैक्टली रॉन्ग है तो नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एनीवन. सो ये बाउंस किसका था? लास्ट वाला 4 का था, तो ये 3 का होगा ना? हाँ 3 का डायरेक्ट है. ठीक है, तो 3 अनम्यूट योरसेल्फ. तुमको एक और बाउंस, चूंकि बाउंस पे कोई करेक्ट नहीं बोला तो बाउंस के लिए हिंट है कि ये जो वैक्यूम है, बाउंस का हिंट है, ये जो वैक्यूम है जो क्रिएट हो रहा है, इट्स बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये वैक्यूम वाला एनवायरनमेंट चाहिए टू प्रिवेंट कंबशन, something that becomes very warm and you need to prevent combustion in it. Team 4. नहीं, team 3 Aman Kumar. Team 3 sir, other teammate joining sir. Join होगा. Yes sir, join. He will answer. तो attempt लो. ड्राइविंग मास्क बोल देता है ना. हाँ बोल दो. सर ड्राइविंग मास्क. क्या? ड्राइविंग मास्क. Yeah, it is not driving mask. Team 2 पे आएगा bounce. और वो हाँ टीम 2 तो बाउंस नहीं लिया था ना. टीम 2 पे आएगा. नो सर. टीम 2 अटेम्प्ट लो. सर कुकर. इट्स नॉट अ कुकर. ठीक है, तुम लोग को पहले ही बोले 1865 रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन जो सबका घर पे यूज हो रहा है. ठीक है, टीम 1 लिया था बाउंस. नो सर. क्या पता, टीम 1 मेरा देख ही नहीं पाया ना, मैंने तो टीम लीव 1 हो गया था. Sir, we guess bulb maybe. या इट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. इट इज द फिलामेंट बल्ब. वो बल्ब के अंदर में वैक्यूम क्रिएट करना होता है, आर्टिफिशियल वैक्यूम, ताकि फिलामेंट ना जल जाए. तो इट इज टीम 1 गेट्स अ +10. राहुल स्कोर नोट हो गया? यस सर, हो गया. ठीक है, तो इट वाज इलेक्ट्रिक बल्ब. दिस वन डायरेक्ट टू टीम नंबर 2. In late 90s, a famous American sportsman who was at the prime of his career and fame was at Beverly Hills Hotel in LA when he overheard two people talking about a new technology related to internet, and he struck up a conversation with them. Turns out they were employees of a startup and he was impressed by the product they were building, so he invested in them and got pre-IPO shares in their startup, and it is his best investment decision ever. Who and what company? तो एक अमेरिकन एथलीट है और ये इसको होटल में 2 बंदा लोग बात कर रहा था, वो लोग का कन्वर्सेशन सुना और लोग से बात किया, तो वो लोग को पता चला कि ये लोग कोई स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है लेट 90s में, और वो लोग का प्रोडक्ट से वो इतना इंप्रेस हुआ कि इन्वेस्ट किया और उसको प्री आईपीओ शेयर सब मिल गया, और ये उसका बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. ठीक है, एथलीट के लिए डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा है, तो हम एथलीट के लिए हिंट दे रहे हैं. Literally the most popular American athlete you can think of. You have seen him in numerous memes. ठीक है, memes भी बहुत बड़ा हिंट है इसके लिए. और कंपनी के लिए हिंट है, कंपनी के लिए हिंट नहीं देंगे बिकॉज इट इज द फर्स्ट कंपनी दैट कम्स टू माइंड. सो एक पाउंड्स पे दोनों मेरे को चाहिए, दोनों चीज चाहिए. ठीक है, तो फील फ्री टू टेक अ पाउंड्स. फैजान का मेरे को कैमरा ऑफ दिख रहा है, टीम 1. So pounds closes in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed.
ठीक है. Proctors, can you check कि सबका कैमरा ऑन है एक बार? हाँ वही फैजान का ऑफ है सर, बोले ठीक है, तो उसको ये मैसेज भी किए हैं. ये डायरेक्ट था टीम 2 का, ये डायरेक्ट आएगा ना टीम 2. Yes. हिंट फिर से हम रिटरेट कर दे रहे हैं. The biggest American athlete you can think of, he's a basketball player. हम इतना भी बता दे रहे हैं. He's a basketball player and you have seen him in numerous memes. और कंपनी के लिए literally the biggest tech giant you can think of. Team 2, your direct. Team 2 answer or I'll pass to team 1. Sir, Michael Jordan and Google. Team 1. टीम 1 का एक का तो ये ऑफ है, कैम ऑफ दिख रहा है, तो I should not let him attempt this question. Sorry sir, because of some issue I was not able to attend the question also. So if my partner is there, if he have read, he can answer. तुम्हारा पार्टनर कौन है, कहाँ है, दिख रहा है मेरे को? Divyanshu. Team 1 Divyanshu, can you unmute yourself and take an attempt? Team 1 Divyanshu. Okay, so we pass to team 7 because no one is taking an attempt. Team 7. Sir, Kobe Bryant. दोनों के लिए guess लो. For second one. Kobe Bryant and Alibaba. American company है bro. और ये team 6 नहीं, multiple attempts नहीं होगा bounce पे. Team 6. सर वो पहला वाला का तो अगर सही हुआ तो टीम 6 टीम 6 नहीं, सुनो, हम जो भी स्कोर होगा एंड में बताएंगे. टीम 6. Michael Jordan or Bloomberg something. Bloomberg. Not Michael Jordan and Bloomberg. Team 5. Sir, Michael Jordan, Charlotte Hornets. No, team 4. Sir, I guess Michael Jordan and Nike. It's not Michael Jordan and Nike. Team 3. Kobe Bryant and Coca-Cola. No, not Kobe Bryant and Coca-Cola. Coca-Cola was founded in the 1800s, if I am correct. So नहीं तो. और टीम 2 आखिरी बचा. सर हो गया, उसका डायरेक्ट था वो. टीम 2 का डायरेक्ट था ना. अच्छा, ये टीम 2 क्या बोला था? So they said Michael Jordan and Google. Yeah, they said Michael Jordan and Google. So team 2 gets +10 because they got Google right. ठीक है, तो team 2 को +10 दे दो. And the answer is Shaquille O'Neal. You've seen him in a lot of memes, and so I thought people would know him because he is literally the most popular basketball player there is. तो स्कोरिंग हो गया. ये टीम 1 का डायरेक्ट है. अगला वाला क्वेश्चन टीम 1 का डायरेक्ट. So the name for this device was proposed by Vinny Chico, a freelance copywriter. After seeing the prototype, he thought of a phrase from the movie 2001: A Space Odyssey. It referred to the fictional spacecraft used for extravehicular activity in the movie. The Jupiter spacecraft Discovery 1 carries 3 of these small one-man maintenance vehicles. What popular product name is this? ठीक है, तो ये कोई डिवाइस है जिसका नेम 2001 स्पेस ऑडिसी में जो छोटा वन मैन मेंटेनेंस व्हीकल सब है उससे आता है. ठीक है, इट्स अ पीस ऑफ टेक. और हम इतना हिंट देंगे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीसेस ऑफ टेक ऑफ द 2000s. ठीक है, लास्ट डेकेड. ठीक है, pounds closing in 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. 4 teams have pounced. All 4 of them are correct.
सो ये कौन है? टीम 6 का +20, टीम 7 का +20, टीम 3 का +20 और टीम 4 का +20। ठीक है, 4 टीम का +20 नोट हो गया। यस टीम 1 का डायरेक्ट था, सो टीम 1। नो आइडिया सर, नो आइडिया। ओके, तो कौन टीम 7 पे आएगा ना? टीम 7 पाउंस लिया था? टीम 7 नहीं लिया था। सर पाउंस किए थे टीम हाँ 7 लिया था, हाँ लिया था। कौन कौन नहीं लिया है? टीम 5 नहीं लिया है पाउंस और टीम 2 नहीं लिया है, तो टीम 5 पे आएगा पाउंस पहले। I think iPod. कौन बोला टीम 5 से? Team 5 sir, iPod. Okay, so iPod it is. You get +10, team 5 for iPod. iPod it is. और जैसा कि तुम लोग को बोले थे, 2 टीम जो था, ये एक टीम जो है वो आया नहीं, क्योंकि हम लोग को 2 टीम को डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। तो ये आखिरी क्वेश्चन जो बच रहा है ये राउंड का, ये फिर से पाउंस ओनली है फॉर एवरीवन। नो डायरेक्ट्स, नो बाउंस, जस्ट पाउंस। ओके, सो तुमको ये इमेज पे दिख रहा होगा, कुछ पैटर्न बना हुआ है, ठीक है? पेन से नहीं, ऐसे डॉट 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 करके। So this pattern is incorporated in a number of secure documents such as notes और जो bond papers अब होता है, title, ownership title certificates etc. It is added to help imaging software detect the presence of such document in a digital image, ताकि कोई इसका फोटोकॉपी वगैरह ना कर पाए, फेक्स ना बना पाए नोट्स का, उसके लिए। ठीक है, तो this pattern has never been mentioned officially by any government. However, so the name, एक इंडियन गवर्नमेंट का नोट्स में इसको ओमरॉन रिंग्स बोलते हैं, ठीक है? बट द जनरल नेम दैट वी यूज फॉर इट इज अ पोर्टमैंट्यू. It comes from the fact that it was first discovered in a euro note, and the fact that it looks like a celestial phenomenon. So euro notes and a celestial phenomenon, ये दोनों का पोर्टमैंट्यू से हम लोग को मिल रहा है ये वाला टर्म। ठीक है, so figure out the blank. Pounds only, and I need the specific answer, the exact name of this pattern, and I'll be closing the pound. सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? I'll be closing the pounds in. सर इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव होगा, पाउंड्स ओनली है। पाउंड्स क्लोजेस इन 5 4 3 2 1। पाउंड्स क्लोज्ड। 6 टीम्स पाउंड्स ले लिया आखिरी सेकंड तक। ठीक है, तो टीम 5 को नेगेटिव, टीम 5 का नेगेटिव नोट हुआ। यस सर। और फिर ये क्या है? ठीक है, टीम 5 का नेगेटिव और टीम 2 को छोड़ के बाकी सबका +20। टीम 2 अटेम्प्ट नहीं लिया था। ठीक है, सबका +20, टीम 5 का नेगेटिव और टीम 2 का 0। मयंक, घर में लाइट कड़ी है क्या? ठीक है, सो कैन वी मूव ऑन टू द आंसर? Answer is Urian constellation. I am proud that all of you took this answer, took this guess. ठीक है, can we have the scores please? देखना होगा, मेरे को लग रहा है कि सब लोग तो अटेम्प्ट ले ही रहा है, तो टाई होगा नेक्स्ट राउंड के बाद। यस सर, जस्ट अभी शो कर दे रहे हैं। स्कोर अपडेट करके दिखाओ। लाइट कटा है, तो अगर तुमको Sir, आगे can we पीछे take करना a है, 2-minute break? ठीक है, ले लो 2 मिनट ब्रेक। और 280 250 220 200 टाई नहीं है एक्चुअली में, 2 टीम में टाई है। टीम 4 एंड टीम 7 आर टाइड फॉर द 4th प्लेस। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में मेकअप हो सकता है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। किसी को हाथ पांव फैलाना है, किसी को ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो।
पानी वानी पी के आना है, घर में लाइट उठ कटा है, ले लो ब्रेक। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अभी 9:08 हो रहा How है। many more rounds are remaining? एक राउंड है और ये शॉर्ट राउंड रहेगा क्योंकि ये बाउंस ओनली राउंड है। नो बाउंसेस, तो जो टाइम जाता है बाउंस पे वो नहीं जाएगा, तो इट्स अ बाउंस ओनली राउंड, 1 राउंड लेफ्ट। कल जैसा 10 बजे सर, हम तक लोग नहीं कितने चलने बजे वाला कंटिन्यू है। करेंगे दोबारा? 2 मिनट में हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। अभी 9:11 पे हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। आ जाओ जल्दी से। 9:11। ओके सर, हाँ, ओके। ओके। घंटे भर से बैठे हुए हैं। 2 मिनट ब्रेक। किसी को अगर अपने स्कोर्स जो दिखे उसमें दिक्कत है तो अभी बोल दो। स्कोर स्क्रीन प्रेजेंट करते रहो 2 मिनट का। ओके सर, कर देगा। लीड कौन कर रहा है? लीड इज टीम 1, रोज इन ब्लैक। रोज इन ब्लैक। कल तुम लोग कल भी फाइनल्स में था ना? कल कौन कौन फाइनल्स में था तुम लोग में से? सर वोल्डमॉर्ट्स नो स्टिल। और ये टीम 2 भी था, लेकिन टीम 2 अपना नाम चेंज कर दिया है। सर हम लोग भी थे सर, क्यूरियस आइसोटोप्स भी थे, कल हम लोग नाम चेंज किए थे। ओह ठीक है। हम थोड़ा ज्यादा देर बोल दिए ना, 9:11 बोल दिए 8 का। कोई बात नहीं, 1 मिनट बाकी है। टीममेट्स को बोल दो आने जल्दी से। ठीक है, टाइम हो गया। अपने टीममेट्स को आने बोल दो जल्दी से वापस। सबका कैमरा ऑन हो जाए। प्रॉक्टर्स देख लो सब लोग वापस आ रहे हैं कि नहीं और कैमरा ऑन हुआ कि नहीं। टीम 2 में किसी एक बंदे का कैमरा ऑफ दिख रहा है मेरे को। टीम 2 में दोनों बंदों का कैमरा ऑफ दिख रहा है और टीम 5 में प्रियांशु का, टीम 1 में दिव्यांशु का। वापस आने बोल दो टीममेट्स अपने। स्कोर हटा सकते हैं। ओके, सब वापस आ गए। सब वापस आ गए क्या? टीम 1 हाँ बोल दो भाई, अगर आ गए हो तो रुको। टीम 2 वापस आ गए। टीम 3 भी मेरे को दिख रहा है। टीम 5 भी दिख रहा है मेरे को। ये प्रॉक्टर लोग किधर गया? करो ना ये काम। टीम 6 भी दिख रहा है। 7 भी है। ठीक है, सब है। टीम 1 भी दिख रहा है। 2 बस 2 दिख रहा है। ठीक है, हाँ सारी टीम्स है तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये पाउंस ओनली राउंड है। दिस इज अ पाउंस ओनली राउंड एंड +20 -10 ऑन ईच क्वेश्चन। ठीक है, और वही मेरे को बाउंस करना है तुम लोग को, बस कोई बाउंसर्स नहीं होगा ये राउंड में। विजुअल राउंड है, विजुअल कनेक्ट भी नहीं है, विजुअल राउंड है। सारे क्वेश्चन विजुअल है। तो सर इज दिस द लास्ट राउंड? या दिस इज द लास्ट राउंड और ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि बाउंस ओनली है और क्वेश्चंस भी 8 नहीं है इसमें, तो जल्दी ही होगा, कम क्वेश्चंस है। ओके। चलो सुदेश,
Question number 1. Okay, so you can see PhonePe, you can see QuickFit, you can see total 4 logos here. You can see total 4 logos here. मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? Yeah, हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ठीक है. You can see 4 logos here, PhonePe, QuickFit and two others. तो ये सबको कनेक्ट करना है तुमको, ठीक है? Connect them with an entity. The hint I'll give is that there's an entity associated with PayPal in US. This is the Indian equivalent to that entity. Pounds closes in 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. So only one team has pounced. Whoever is typing, please don't type. Or team 2 gets a negative. Team 2 gets a -10. So can we have the answer? The answer is Flipkart Mafia. So तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं. यूएस में बहुत सारा कंपनी सब है जो कि पेपैल का फॉर्मर एम्प्लॉय सब स्टार्ट किया है, ठीक है. A lot of companies have been co-founded by people who were ex-employees of PayPal. So they are called PayPal Mafia, and an Indian equivalent is Flipkart Mafia. Okay, so all these companies you see there were co-founded by former Flipkart employees. Next question. स्कोर नोट हो गया ना लास्ट राउंड का? तो ये राहुल टीम 2 का -10 था और किसी को कुछ नहीं. So question number 23, connect. You see a microwave, you see a Teflon pan, you see Velcro, and you see penicillin. Connect these 4. I'll give a hint. It's regarding the. अगर तुमको ये चारों में से किसी का भी origin पता है तो तुम लोग इसका guess ले सकते हो. The story of the invention. That's the hint. I guess penicillin का तो पढ़ाया भी गया होगा. If nothing else, penicillin का पढ़ाया भी गया होगा. Pounds closing in 5, 4, 3, 2, 1. Pounds close. 2 teams on pounds. Team 3 pounds Switzerland, which is incorrect. And 2 टीम का पाउंड्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो जो भी मेरे को ब्रिटिश भेजा है खुश रहो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि तुम लेट भेजा. और टीम नंबर 1 का करेक्ट है. कैन वी मूव ऑन टू द आंसर? These are all accidental discoveries. These are all serendipitous discoveries. None of these were intended to be invented, but they were invented by accident. पेनिसिलिन का स्टोरी सबको पता ही होगा. लुई पास्चर को मोल्ड मिला था लैब में अपना एक रात को. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so in this image you can spot a number of scientists. You need to name the occasion where they all met. You can spot Einstein, you can spot Heisenberg in the top row. There are a lot of people here, so just tell me the occasion. What was this occasion where that all these scientists were at the same location? I'll give you a hint. It was a conference. मतलब वो खराबी इंटेलिजेंट. केमिस्ट्री में ये नाम से एक प्रोसेस पढ़े होगे, ठीक है? ये नाम से एक प्रोसेस पढ़े होगे केमिस्ट्री में. पाउंड्स क्लोजिंग इन 5, 4, 3, 2, 1. पाउंड्स क्लोज्ड. 4 टीम पाउंड्स पे है. ये 5 टीम हो गया. अब क्या करें? चलो 5 को ही दे रहे हैं. +20 to team 6. +20 to team 6 हुआ और +20 to team 7.
+20 to team 2, +20 to team 1 और +20 to team 6 हो गया। तो मतलब ये कौन सा 2 टीम को नहीं दिया है? टीम 4 और टीम 5, टीम 4 5 को छोड़ के सबको +20। राहुल हो गया? यस सर। वेरी गुड टू गो। ठीक है, solve a conference it is. And the next question, question number 25, this is the final question actually. You can see this image, कुछ text लिखा है, son है, this machine is a server, don't power down. Put funda, what is this machine? ठीक है, put funda, ये क्या है, इसका क्या significance है machine का? I just need that. ठीक है, you probably at least mention किया होगा इसका name लो बार बार तुम्हारा स्कूल में, एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस में, जिसका भी ये मशीन है। Son, this machine is a server, do not power down. Pounds closes in 5, 4, 3, 2, 1. Pounds closed. 3 teams on pounds. Team 5 is correct. Team 4 is incorrect. और टीम 5 4 और ये कोई अभी टाइप कर रहा है, पी जो भेजा है, कौन भेजा है? टीम 2 आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग बिकॉज पाउंड्स क्लोज करने के बाद तुम भेजा पाउंड्स। और टीम 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो टीम 3 को जा रहा है +20, टीम 5 को जा रहा है +20 और टीम 4 को जा रहा है -10। ठीक है राहुल? यस यस। we move on. This is Tim Berners-Lee's computer at CERN. Next question है क्या? I think this was the last one. नहीं, टाइप ब्रेकर है, तो टाइप ब्रेकर बाद में। Stop the screen sharing. Can we share the scores? Okay, so winners to make side बगल में लिख दिया है गलती से। The winners are Rose in Black at 320. The first runner-ups are Phoebes and Phoebos at 270, and the second runners-up are Quiz Blaze at 240.